लीडरशिप समिट हिंदुस्तान टाइम्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जब तक चाहे भारत में रह सकती हैं। शेख हसीना पिछले वर्ष अगस्त महीने में भारत आ गई थी। एक हिंसक विद्रोह की वजह से उन्हें अपदस्थ किया जा रहा था। एस जयशंकर ने साफ संकेत दिया कि भारत ने कई दफा स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश में शांति बहाल होनी चाहिए। शेख हसीना के समय हुए चुनाव से आपत्ति करके अंतरिम सरकार बनी है। अंतरिम सरकार को तुरंत ही आम चुनाव कर लेना चाहिए। जानते हैं कि अपने मकान से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर पिछले साल 15 अगस्त को शेख हसीना भारत की सीमा में आई थी। भारत में कूटनीतिक स्तर पर भूमिका ली और एक तरह से शेख हसीना को यहाँ शरणागत दिया। बांग्लादेश के निर्माण के समय से ही भारत का इससे संबंध है। शेख हसीना की बांग्लादेश में उपस्थिति का एक मतलब यह था कि वहां बहुसंख्यक मुस्लिम सांप्रदायिकता पर रोक लगाती थी। विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स के सालाना जलसे में 32 मिनट से अधिक का संबोधन दिया। उन्होंने बांग्लादेश के प्रति भारत के कमिटमेंट का जिक्र किया। भारत को बांग्लादेश में जनतंत्र और शांति बहाली का इंतजार है। भारत में रहना शेख हसीना का अपना फैसला है। 78 वर्ष की नेता शेख हसीना का ही यह निजी निर्णय हो सकता है कि वह कब तक भारत में रहेंगी। Since you spoke of our neighbor in the east, Sheikh Hasina is in India and in. By the way, that wasn't the neighbor in the east I had. I had the one for. I'm saying, I'm talking about. Is in India, and so far we've held off all pressure that's being made by Dhaka to send her back to face trial. How do you see Delhi's relationship with Dhaka play out, given the fact that you've got one very key political player and those in power at the moment have a very different view on her? Well, you know, what we heard was that people in Bangladesh, particularly those who are now in power, had an issue with how the elections were conducted earlier. Now, you know, this is not our issue. We are a well-wishing neighbor. Now, if the issue was the election, then you would imagine that the first order of business would be to do a fair election, which has to, hopefully something would, election would happen soon. It's their business. But at the end of the day, if the entire issue was about fair elections, then it makes sense that elections are held. So as far as we are concerned, we wish Bangladesh well. We think as a democratic country, any democratic country likes to see the will of the people ascertained through a democratic process. And, I'm quite confident that whatever comes out of the democratic process would have a balanced and mature view about the relationship, and hopefully things would improve. And Sheikh Hasina is welcome to stay for as long as she wants? Well, that's a different issue, isn't it? I mean, she came here in a certain circumstance, and I think that circumstance clearly is a factor in what happens to her. But again, that is something in which she has to make up her mind.